नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। और बिफोर वी बिगिन आई वुड से ऑल यू नीड इज द प्लान, द रोड मैप एंड द करेज टू प्रेस ऑन टू योर डेस्टिनेशन। तो चलिए फिर इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एससी फ्लैग्स टीवी चैनल चीफ मीडियम ऑफ हेट स्पीच में लेट डाउन गाइडलाइंस। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट हेट स्पीच, प्रोविजंस रिगार्डिंग हेट स्पीच, चैलेंजेस एंड वे अहेड। इन सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है और लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड द विजुअल मीडिया द चीफ मीडियम ऑफ हेट स्पीच एंड क्वेश्चन द गवर्नमेंट व्हाई इट इज स्टैंडिंग बाय एज अ म्यूट विटनेस व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग एंड ट्रीटिंग इट एज अ ट्राइवल matter. Our next important headline is draft bill moves to regulate internet based OTT telecom services. ये अवेलेबल है पेज नंबर 3 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। Recently, Indian Telecommunication Bill 2022 released in a public domain and it seeks to simplify the framework for mergers, demergers, acquisitions or other forms of restructuring by only requiring intimation to the licensing authority. Our next important headline is CRPF claims big breakthrough clears Jharkhand Maoist hub. ये अवेलेबल पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द जेनेसिस ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव एंड व्हाट मोर नीड्स टू बी डन। तो इसको हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है और लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। Our next important headline is non-communicable disease led to 66% of death in India in 2019 WHO. ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 हेल्थ सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट non-communicable disease and what are the findings of WHO's recent report on NCDs. फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट की? Every 2 seconds, one person under the age of 70 dies of non-communicable disease in India. 66% of total deaths were due to NCDs in 2019. अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को देखें तो it is also known as chronic diseases and tend to be long duration. They are the result of combination of genetic, psychological, environmental and behavioral factors. It includes heart attacks, stroke, cancer, diabetes, etc. Our next important headline is पैनल फॉर्म फॉर यूजीसी AICTE टू वर्क टुगेदर ऑन हायर एजुकेशन पॉलिसीज। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 एजुकेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द मैंडेट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमिटी दैट हैज बीन सेट अप टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन and All India Council of Technical Education. Recently, a committee has been set up to prepare a roadmap for University Grant Commission and All India Council of Technical Education to work together as a single regulatory entity. The committee will initially identify areas where the two regulators can work with common approach towards drawing up policies and regulations. Our next important headline is Objection, your lordship. ये अवेलेबल पेज नंबर 13 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाई द चॉइस ऑफ जज टू हियर द केस बिकम्स सो इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू नो अबाउट द रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमने कई बार अपनी वेबसाइट पे कवर किया है, वहां से गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी अदर पॉइंट्स के लिए आप इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं, राइट। Our next important headline is New Commission, Old Reservations. ये अवेलेबल पेज नंबर 13 पे और ये भी रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। In this article we have to know about the constitutional safeguards available for scheduled caste, objectives behind the government's recent move to constitute a national commission to study the social, economic and educational status of members of scheduled caste and why new commission when the old one was ignored and way ahead. तो इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया है। यू कैन गो थ्रू देम, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज नॉट जस्ट अ मैंस प्लस वन। ये अवेलेबल है पेज नंबर 13 पे और ये रिलेटेड है पेपर 1 सोसाइटी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द रियल सिचुएशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, हाउ डिड वी गेट हियर, इश्यूज फेस्ड बाय देम एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप ये गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। Our next important headline is live streaming of SC proceedings, rationale and concerns. ये अवेलेबल है पेज नंबर 15 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। In this article we have to know about the Supreme Court's recent decision to live stream its proceeding in crucial constitution bench cases, objectives behind the move, issues linked to it and what lies ahead. So recently Supreme Court decided to live stream its proceeding in crucial constitution bench cases. उद्देश्य क्या है इसका? Broadcasting court proceeding is a step in direction of transparency and greater access to justice system, but there are concerns around the impact of live streaming both on judges and the people watching the proceedings. Our next important headline is hearing before death sentence. ये अवेलेबल है पेज नंबर 15 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। In this article we have to know why has the Supreme Court decided to settle differences among judgments, what is the difference of opinion, what is an advocate sentencing hearing like
एंड व्हाट आर मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेज एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, एक बार देख लीजिएगा, राइट। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज हाउ अंबेडकर सर्किट इज गुड टूरिज्म गुड पॉलिटिक्स फॉर द बीजेपी। ये अवेलेबल पेज नंबर 15 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट अंबेडकर सर्किट and its relevance for tourism sector in India. Government has first proposed the Ambedkar circuit in 2016 and उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? Idea is to attract tourists beyond Dalit community who mostly visit these places as pilgrimage. The journey will include meals, ground transportation and entry to the sites, right? Our next important headline is the thinnest specks of plastic can infiltrate the human food chain. Find study. ये अवेलेबल है पेज नंबर 15 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट nanoplastics and environmental and health impact of plastic pollution and ways to handle them. Recent study have found that small pieces of plastic called nanoplastic can travel up human food web through plants, insects, even fish, right? Our next and last important headline is semiconductor PLI support for 50% of project cost cleared. ये अवेलेबल पेज नंबर 17 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द गवर्नमेंट्स रिसेंट इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट। रिसेंटली Union Cabinet approved changes to the center's 76,000 crore semiconductor production linked incentive scheme, allowing for uniform fiscal support of 50% of project cost for semiconductor fabs across technology nodes and display manufacturing, right? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.